Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another episode of Psychology Unplugged. I'm Aneesa Saleem, a student of BA Psychology, and I'm here to discuss the importance and myths of therapy. And to discuss this topic with us today, we have Ma'am Nadia Fahim, who is a psychotherapist and a lecturer at ISP. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Welcome, Sam. I'm good. How are you, Aneesa? Alhamdulillah. It's a pleasure having you here. Thank you so much. Thank you so much. To start off the discussion, I would like to ask you, what's the importance of therapy? Yes, Aneesa. These days, importance of psychology is increasing day by day, and because of the inflation, because of the frustration around the society, and because of the uncertainty that what is happening tomorrow, कल क्या होगा और हमारे साथ इर्द-गिर्द क्या हो रहा है environment में, that has created कि अभी हमें psychotherapy और psychology को as a domain accept करना पड़ता है. And then I agree that at one point there were friends, there was a group of friends and the family members who are supporting our individual. But there comes a point when the emotional and psychological need of an individual increases so much that they need a professional help. At that point, they just need a good professional. और उसमें importance क्या है कि किस तरह से वो professional जो है उस इंसान की individual की need को identify करता है, therapy में awareness create करता है और उसके साथ उसकी जो perception है और उसके emotions है उस पर काम करता है. Ma'am, the most basic and the most important question is, how do you choose a therapist? This is very important question, Aneesa. Sometimes, when I choose a therapist for me, I'll just go and Google. Or sometimes people will come to me and they will refer a person, a name to me, and I'll be asking, अच्छा मैं किस psychologist को दिखाऊं? And then they will just give me a name and I'll go to the therapist. मैं उसको Google कर लूँगी, ढूंढ लूँगी. I don't know the credentials. मुझे नहीं पता उसने कहाँ से पढ़ा है, कितना पढ़ा है, and सबसे important उसकी practice कितनी है. So whenever anyone choose a therapist, they must know what they are looking for. What are the credentials a therapist, what is the experience a psychotherapist, a clinical psychologist must have, even a counselor must have. So when I see these things, when I look into this information very clearly, and then I can choose a good therapist for myself. And then when you start therapy, so sometimes people came to me and when I asked them, okay, do you know anything about me? They'll no, we don't know. We are just referred by a psychiatrist. We are just referred by a friend or some of family member. So I introduce myself with my brief intro, that is my education, that is my experience. So that is the right of the client to know. And this is that right which they basically don't know in our society. So we just go for the referrals. If a therapist is asking, okay, fine, I am charging this much, I'm giving you a package, you have to come for these number of sessions for me, these number of sessions to me. तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसके पास जा रही हूँ. And what is my requirement? It's better to have known. It is better to have a it's better to have a search. It's better to have a homework about a therapist. कि वो किस तरह का उसका काम है. अगर आपके पास उसका थोड़ा सा वो आता है जो feedback है, what is their feedback. And sometimes I do agree that a therapist is good for you, but it's not good for the other person because it's a therapeutic relationship. It's about the personality, it's about the dynamic of the personality which a therapist and a client has in a therapy room. So I agree that therapist credentials or therapeutic skills vary from client to client, and the client's need vary from therapist to therapist. There are a lot of transference, and there are a lot of other factors that are influencing therapy. But at that time, therapist and client, they both are basic human beings who can understand and who identify that this therapist is good for me and this client, this therapist is good for me and that therapy is working for me. Mm-hmm. So moving on, if I'm a client, we say, what are my responsibilities?
as I told earlier, that when you are coming to me, you must have like you have a homework about, okay, what who am I, what is my qualification. So when you come to me, then you have a better idea कि मेरा experience कितना है, especially experience कितना है, because unfortunately if I am a student of BS, I did my BS in psychology, I'm known as psychologist. And if I have an experience of 13, 15, 20 years, I'm also a psychologist. So as a client, it's your responsibility to understand what are your rights in therapy. मैम इट्स ऑल्सो सेड कि जब तक इंसान खुद नहीं ठीक होना चाहता तब तक वो ठीक नहीं हो सकता, चाहे जितनी भी थेरेपी ले ले. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? To some extent, willpower really matters. For example, if you are coming to me, and if you are coming to me, for example, a very, very minor and very normal example, you are coming to me, you are coming for the sessions and you are always coming late. So I am telling you that, Aneesa, you have to come on time, or okay, fine, so this is your 40 minutes with me and I charge you for that 40 minutes. So this is your boundary, this is your need, this is your, I mean, this is your right about yourself, that if I'm giving money for 40 minutes, then I should use these 40 minutes. So yes, at some point, it's depend on the client as well. Sometimes clients, they are just coming to therapy for the sake of word therapy. Okay, fine, I'm going to the therapy. And they are not participating, they are not ready to change. And yes, there are factors about it. A therapist, when a client comes to me and he is showing these things, these attributes, so I work with them, I start working with them. But at time, client is coming, and if I'm giving some homework, some small assignments, even deep breathing, even I'm asking you, okay, fine, when you have an anxiety attack, so do deep breathe, grounding exercise and stuff like that. So you went to home and you didn't do anything. I have asked you to different, I mean different therapeutic techniques which I ask you that, okay, Aneesa, go and apply at home. Just try that. When a client comes to me and they have a relational issue with family, parents and siblings stuff, and then I ask them, okay, fine, go and spend some time with the family. For example, when I ask a client कि अच्छा वो मेरे पास client आता है and he says कि I don't have a good time with the family, या मेरा family के साथ communication नहीं है, और मैं उसको कहती हूँ कि अच्छा तुम go and spend some time with the family, जिसको हम family therapy कहते हैं, दिन में आधा घंटा family के साथ गुजारो, और let's see how it happens for you, और try करके देखो. अगर तुम आधा घंटा नहीं बैठ सकते हो तो 15 minutes 20 minutes से start करो. But they don't do that. बिल्कुल नहीं बैठते, बिल्कुल नहीं करते. कुछ के लिए बिल्कुल अनबेरेबल भी तो हो जाता है. लेकिन अनबेरेबल जब होता है ना, तो हम टाइम देते हैं 5 minutes का, 10 minutes का, ताकि they can explore what is wrong with them. क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बिटवीन देम एंड फैमिली. क्योंकि जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, नॉर्मली हम यही करते हैं ना कि आई जस्ट कट ऑफ, मुझे घर में मज़ा नहीं आ रहा, मैं आई एम जस्ट कन्फाइंड इन माई ओन रूम. ठीक है, मैं इकट्ठे बैठना पसंद नहीं करूँगी, मैं अपने यूनिवर्सिटी गई, वहाँ से अपने रूम में चली गई. आई एम वेरी सोशलाइज इन माई फ्रेंड्स, बट आई डोंट इवन लाइक टू टॉक विद माई सिबलिंग्स, विद माई फैमिली, और वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रहा है एंड आई एम ब्रिंगिंग दिस इशू टू थेरेपी. तो उस टाइम पे थोड़ा सा क्लाइंट को भी ये माइंड प्रिपेयर करना पड़ता है कि अच्छा मुझे, मैं थेरेपी पे जा रहा हूँ तो आई नीड टू चेंज माई सेल्फ एज वेल. डज आई मेक एनी सेंस कि कहाँ थेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कहाँ क्लाइंट की है. तो इट्स नॉट ऑलवेज द थेरेपिस्ट हु इज़ रॉन्ग, कि चांस पे देना पड़ता है आपको डेफिनेटली. और फैमिली के लिए, और आपको मतलब कोई भी स्केल करे ना, मतलब कोई भी, अगर सोशल एंजाइटी है, ओसीडी है, फोबियाज हैं, मैंने सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो क्लाइंट को बता दी है, एक्सपोजर थेरेपी बता दी है, जो भी हमारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, हमने बता दिया है. नाउ व्हेन अ क्लाइंट मतलब लीव्स द थेरेपी रूम, तो दिस इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आती है. एंड माई ट्यूटर सेड इट वेरी वेल, एंड आई रियली अंडरस्टैंड दैट. जब मैं थेरेपी कर रही होती हूँ कि थेरेपी रूम से आपने क्या लेके जाना है, इट्स अप टू यू. लेकिन अगर एक लाइक क्लाइंट की लिमिट्स ही बहुत थोड़ी होंगी, मतलब आप उसको एक्सपोजर के क्या लेवल्स देंगी? मिनिमम से मिनिमम. Just to, if a client cannot handle exposure, I will go for the systematic desensitization. I will not go for the exposure. ठीक है, I will ask him कि okay fine, just imagine. I'll work with the fantasy of the client.
And then if the parents are abusive somehow, if the siblings are abusive, if the partner is abusive, and client don't feel comfortable with them, around them, so I will not ask them to do that. I ask him to do another activity. मेरा कहने का मकसद, मतलब what I meant to say was that कि आप जो भी आप टेक्निक, जो भी आप क्लाइंट को दे रहे होते हैं, यू आर टॉकिंग इन द थेरेपी, आप बात कर रहे होते हैं, तो देर इज़ अ मीनिंग, देर इज़ अ लेसन, देर इज समथिंग विच अ क्लाइंट ब्रिंग्स विद देम. वो जब थेरेपी रूम से बाहर निकलते हैं ना, तो वो कुछ लेकर जा रहे होते हैं. तो व्हाट आई मीन टू से इज कि वो उसको थोड़ा सा उस पर एनालिसिस करें, थोड़ा सा उसको ट्राई करके देखें. आई ऑलवेज आस्क देम टू जस्ट ट्राई डीप ब्रीथिंग, बी जस्ट ट्राई अबाउट इट, करके देखें हाउ इट वर्क्स फॉर यू, आपको कितना फर्क पड़ रहा है उससे, एंड हाउ इट इज मेकिंग डिफरेंस इन योर लाइफ. ठीक है, we'll carry on from this after we take a short break. Stay with us. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक. जैसे कि हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि थेरेपी की इम्पोर्टेंस क्या है और एज अ क्लाइंट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और सिर्फ आप एक थेरेपिस्ट पे डिपेंडेंट होकर नहीं रह सकते, आपके भी कुछ रोल्स हैं, आपने भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है ठीक होने के लिए. मूविंग ऑन, आई हैव अ क्वेश्चन कि जो क्लाइंट्स जिनकी फैमिली उनको थेरेपी में फोर्स आउट कर तो देती है, लेकिन वो खुद मेंटली रेडी नहीं होते बात करने के लिए, आप उन क्लाइंट से कैसे डील करती हैं? सबसे पहले तो अनीसा, आई गिव देम सेफ प्लेस, क्योंकि दे हैव मिथ्स अबाउट थेरेपी कि पता नहीं क्या होगा, थेरेपिस्ट किस तरह से बात करेगा. बेसिकली दे आर मोर अफ्रेड ऑफ द जजमेंट्स कि ओके फाइन, आई एम गोइंग टू आर थेरेपी, इट्स मीन आई एम अ वीक, या मेरे घर वालों को ये लग रहा है कि आई एम नॉट नॉर्मल, आई एम एबनॉर्मल, सो दैट्स व्हाई दे आर सेंडिंग मी टू थेरेपी. तो जब वो मेरे पास आते हैं तो आई गिव देम लाइक safe environment, safe place where they can talk about, or I accept them as they are. और उससे वो एक it's not always like verbal, मेरा नॉन वर्बल जेस्चर भी होता है, that makes them comfortable in the therapy, और फिर वो ओपन अप होना स्टार्ट करते हैं. एंड कुछ लोग जैसे इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, या जो लोग सोशल एंजाइटी जिन्हें होती है, दे डोंट टॉक मच, तो उसमें आई डोंट माइंड इफ़ आई spend time 15 minutes with them, we are not talking, we're just sitting there. So it's about my and their relationship chemistry, that we are comfortable in each other's presence. What about the confidentiality? आप की कुछ obligations होती हैं कि आपके और आपके client के दरमियान जो बातें हैं वो उन तक रहेंगी, लेकिन एक ये फैक्टर भी आ जाता है, ये मेरी फैमिली को ये चीज़ें ना बता दें, तो वो एक बीच में बाउंड्री रह जाती है, बैरियर रह जाता है, उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, आई टेल देम वेरी क्लियरली दैट देयर कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ देयर राइट ऑन मी.
मैं उन्हें ये नहीं कहती हूँ मैं आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखूँगी, मैं उन्हें कहती हूँ ये आपका राइट है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो आपके और मेरे बीच में रहे। इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ आती है कि इट्स अप्लाइड ऑन अबव 18 ईयर्स, ठीक है। अब जो 18 ईयर्स से छोटे बच्चे आते हैं उन्हें हम जूनियर बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो आते हैं उनमें समटाइम्स ऐसा होता है कि दे आर डूइंग सम एक्टिविटीज़ जो कि दे डोंट वांट देयर पेरेंट्स टू नो, तो वो फिर मैं मतलब ये मेरे पर डिपेंड कर रहा होता है एज ए थेरेपिस्ट, जो भी थेरेपिस्ट काम कर रहा होता है कि वो क्लाइंट को कैसे सेफ प्लेस देता है और फिर हम अपनी बाउंड्री कैसे बनाते हैं क्लाइंट के साथ। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को बता दूँ। तो आई टेल देम कि अच्छा, क्योंकि आई एग्री विद यू कि कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत इशू होता है, दे डोंट वांट कि उनकी हर बात उनके पेरेंट्स को बताई जाए। तो फिर मैं उनके साथ कॉन्सेंट कर लेती हूँ कि अच्छा ये बिहेवियर मतलब गोल्स हैं, सो इफ़ यू आर डूइंग दिस इन द होल वीक, so I'm not going to tell this to your parent. And then I become very vigilant. Definitely I'm taking the responsibility of them. So I become very vigilant कि जो मैंने उनको कहा है they are doing that. सिर्फ मेरे पास आके सेशन में कह नहीं रहे। तो वो बहुत रियलिस्टिक गोल्स होते हैं, डिपेंड वेरीज फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। और सेकेंडली ये होता है कि जो 18 साल से ऊपर क्लाइंट होते हैं उनकी तो कॉन्फिडेंशियलिटी लाइक मस्ट है कि आप उनके पेरेंट्स हैं, उनके सिबलिंग्स हैं, उनके स्पाउसेस हैं, वो आके आपसे जितना कुछ मर्जी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, यू आर नॉट सपोज टू टेल देम। और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यहाँ कल्चर में बहुत होता है। मतलब मैं अगर 45 ईयर्स ओल्ड आदमी को भी देख रही हूँ या बीवी को देख रही हूँ या किसी भी ह्यूमन बीइंग को देख रही हूँ, तो उसका रिलेटिव, पेरेंट, केयर गिवर, स्पाउस आएगा, अच्छा क्या प्रॉब्लम है, ये ठीक, तो फिर मुझे पता होता है कि मैंने कितनी इन्फॉर्मेशन बतानी है कि हाँ जी ये ठीक हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा केयर गिवर्स को प्रॉब्लम ये होती है, मतलब दे आर कंसर्न्ड अबाउट बेसिकली कि ये ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम, तो मैं उन्हें कहती हूँ हाँ जी ये ठीक हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी लाइक विजिलेंट प्रोसेस कि आपने माइंडफुली कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि इफ़ यू लूज़ ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट वंस ऑन अ सिंगल एक माइनर चीज़ पे भी, इफ़ यू लूज़ दैट यू लूज़ द क्लाइंट फॉर एवर। और जो मोरली रॉन्ग्स होते हैं, जो आपके मुताबिक एक चीज़ गलत है, तो आप उन पे किस तरह रिएक्ट करते हैं और आप उनको किस तरह उस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं? मॉरली रॉन्ग मेरे मुताबिक, आई मीन दिस जी आपके मुताबिक जो आपका क्लाइंट एक चीज कर रहा है वो मोरली रॉन्ग आपके लिए है, माइट नॉट बी इलीगल बट इट्स मोरली रॉन्ग टू यू, तो हाउ डू यू डील विद योर जजमेंट? No, as a therapist, I have to like keep my judgment, my baggage, my material aside. मैं वो थेरेपी रूम में लेके, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उसके बगैर एंटर होती हूँ, मैं उसके साथ जाती हूँ, मगर मुझे पता होता है, आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ दैट कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई वेयर दुपट्टा, ठीक है, तो अगर एक क्लाइंट आ रही है, शी इज़ नॉट वेयरिंग इवन अ दुपट्टा, तो मैं उसको जज तो नहीं करूँगी ना कि अच्छा नहीं ये तो इस्लामिक ही नहीं है और या ये मेरे मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करी। तो वो बीइंग अ थेरेपिस्ट यही मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्स मतलब सक्सेस है, इट मेक्स यू अ गुड थेरेपिस्ट। अदरवाइज तो इफ़ आई एम throwing my judgment to my client, then I'm not a therapist. क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही आ जाती है कि मैं थेरेपिस्ट से शेयर करूंगी लेकिन वो आगे मुझे जज कर रही होगी कि नहीं ये बात गलत कर रही हूँ मैं, या फिर मैं जिस तरह फील कर रही हूँ मैं गलत कर रही हूँ। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। कुछ लोग अपना ट्रॉमा बहुत इनवैलिडेट कर देते हैं कि वो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि उनके पेरेंट्स के साथ उनका बहुत एक रॉकी रिलेशनशिप रहा है, उनका बचपन somewhat emotional abuse में गुजरा है, but they come to believe कि नहीं मेरा ट्रॉमा इतना वैलिडेट नहीं होता कि मैं उसको इतना खुल के डिस्कस करूँ, I'll be seen as a spoiled person कि नहीं disobedient child. Yes, I agree with you, लेकिन being a therapist this is something which I must know, which I must learn. मतलब if I'm trained, if I say myself कि मैं I'm a trained psychotherapist and I must know कि मैंने unconditional positive regard, non-judgmental attitude, non-judgmental जो gestures हैं वो client को कैसे देने हैं। Whenever I give my intro, I'm just talking about myself, whenever I give my intro to my client, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि ये मेरा नाम है, मेरी qualification है, and I will try my level best that I don't do any judgment. क्योंकि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन बीइंग अवेयर ऑफ माई जजमेंट इन द हियर एंड नाउ इन द सेशन रूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मेरा सारा मटेरियल बैगेज मेरे साथ होता है, मगर वो मुझे मेरी थेरेपी को अफेक्ट नहीं कर रहा। इफ दैट इज अफेक्टिंग माई थेरेपी देन इट्स माई ट्रांसफरेंस। तो एवरी काइंड ऑफ ट्रॉमा इज वैलिडेट इनफ? Yes, for sure. Every kind of trauma and every problem of them
चाहे वो आपके लिए मॉरली ठीक है कि नहीं है, कल्चरली ठीक है कि नहीं है. इफ़ दे आर सफरिंग इट, दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर देम. It's only me, it's only मतलब I know कि how to handle it. I mean I can, if a person is coming to me और वो कह रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी को कत्ल कर दूँ, डेफिनेटली मैं उसको अलाउ नहीं करूँगी. या कोई भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आके वो ऐसी चीज़ कहता है जो मुझे रिलीजियसली सूट नहीं कर रही, बिल्कुल अगेंस्ट बात की जा रही है उसके, तो मुझे बीइंग अ थेरेपिस्ट आई मस्ट नो कि मैंने उसको लेके कैसे चलना है. मैंने उसके उस प्रॉब्लम को वैलिडेट भी करना है और वहाँ पे ब्रेक भी लगानी है. तो दिस इज़ व्हाट आवर ट्रेन्ड थेरेपिस्ट डू. तो वहाँ पे यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट. Ma'am, what is the boundary where you're supposed to actually report the clients? When they are very aggressive, when they can harm themselves and when they can harm others. If a client is suicidal, I don't live with them all the time. वो मेरे पास 40-45 minutes के लिए आया है. And when they have very strong suicidal thoughts, so I definitely refer to a psychiatrist. And again I tell this to my client in my intro कि अगर कुछ ऐसा होगा कि if I find you suicidal or homicidal, किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं, you are very aggressive, तो या एडिक्टिव इतने ज़्यादा हैं कि वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आई एम गोइंग टू टेल योर साइकेट्रिस्ट और योर केयर गिवर्स, नॉट बिकॉज ऑफ कि वो आपको स्पाई करें, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो आपको दे टेक केयर ऑफ यू. सो दिस इज़ समथिंग वेरी, मतलब जो आप अपने इंट्रो में बताते हैं क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट को भी पता हो कि ये अगर बाउंड्री इन्वेड हो रही है तो इट डजंट मीन कि मेरी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है. What role do parents have in a client's mental disorders? क्योंकि I've seen कि childhood has a lot to do with your Yes. mental disorders. So how much of a role do parents play in it? देखो अनीसा, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल थिंग, लेकिन वी नीड टू सी पेरेंट्स एज ए ह्यूमन. लेकिन जो पेरेंट्स का रोल होता है फॉर 1 to 3 year चाइल्ड, वो एक डेमी, मतलब वो एक आइडियलिस्टिक रोल होता है. तो यस, टू सम एक्सटेंट कुछ थेरेपिस्ट वैलिडेट भी नहीं करते. इफ़ अ क्लाइंट इज़ कमिंग टू अ थेरेपिस्ट कि आई हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद माई पेरेंट्स, तो हम रिलीजियसली बाइंड हैं, कल्चरली बाइंड हैं पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करने के, और आई टोटली एग्री विद दैट. लेकिन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना ज़रूरी है. आई मीन जब मेरे पास क्लाइंट आएगा तो मैं उसको ज़रूर पहले वैलिडेट करूँगी कि येस आई अंडरस्टैंड, हाउ डू यू फील. सो मैं उसकी फीलिंग्स की अवेयरनेस हम जनरेट करते हैं कि हाउ डू यू फील अबाउट योर पेरेंट्स. For example, if they feel disappointed, if they feel bad, if they feel distressed, they feel hurt, they feel anger, then I work with the feeling, not with the parent, not with the ideal objects. I work with the feeling in the therapy room. So do you ask them to forgive their parents, or Not is all there the a time. boundary where you say कि it's okay to go no contact? Yes, no contact. No, it's not. It's okay to like have these feelings, but okay, fine. This is the role, and this is. I mean, this is like, this varies from client to client. This varies from their situation to situation, and I would not force them to forgive their parents whenever they are not ready to. Because in our society it's like Yes. कुछ भी हो जाए, तुम्हारे माँ बाप I हैं, know. उन्होंने तुम्हें पैदा किया है, पाला है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता. हाँ, as I told you that I work with the feelings. I don't work with the objects. And then what is the most important is that I work with them to realize that their parents are a human being. So we allow to make mistakes to human. We don't allow to make mistakes to our ideals, to demigods. You're really right about that. So moving on to our last question of the day. How do the expectations of a client influence therapy? कि कुछ clients की expectations होती हैं कि therapy is just magic. कि मैं कुछ sessions दूंगी and I'll be perfect, a new person already, and I won't have any stress at all. What do you have to say about that? और कुछ क्लाइंट्स को बाहर निकल के वो कहते हैं बिल्कुल फजूल है थेरेपी, थेरेपिस्ट बिल्कुल फजूल है, थेरेपी इज़ नॉट वर्किंग, इट्स जस्ट अ टॉक थेरेपी. आई हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट. अनीसा, ये डिपेंड करता है कि हाउ आई एम सीइंग थेरेपी. When a client comes to the therapy, they have this mindful awareness. Yeah, therapist उनके साथ मिलके फर्स्ट सेशन में या फर्स्ट सेकंड सेशन में ये माइंडफुल अवेयरनेस डेवलप कर सकता है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ थेरेपी. क्लाइंट थेरेपी में क्यों आया, एंड होता है कि वो कभी डिसअपॉइंट होता है. आई मीन वो कुछ नहीं हो रहा होता जो कि वो चाह रहे होते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन शुड बी रियल, जो कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट को आपस में बात कर लेनी चाहिए. एंड द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो
हमारी सोसाइटी में आई सफ़र आई डील अ लॉट कि आपका 20 years का प्रॉब्लम है एंड यू वांट इट हैंडल्ड, यू वांट इट लाइक करेक्ट, perfect in 2 sessions. That can never happen. Therapy is therapy, a slow, ongoing healing process. It's not a magical process. So sometimes I normally mention in my all interviews that sometimes parents comes to me and they give me a role model कि मेरे बच्चे को इसमें डाल दो. कपल आते हैं या मतलब anyone, तो मैं वो नहीं कर सकती. और ये मुझे उनके साथ भी, केयर गिवर्स के साथ भी काम करना पड़ता है कि इस तरह नहीं होता. सो हाउ यू आर सीइंग थेरेपी. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आज आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से क्लियर करना चाहूँगी, थेरेपी इज़ नॉट ऑलवेज कंफर्टेबल. इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव सम इशू, आई एम डीलिंग इट फॉर लास्ट 5 years, for example, and I went to my therapist and my therapist told me that this is because of that you have this thing. I mean, there is something wrong in me. My therapist challenged something in me, my pattern. So I'll be like कि ऐसे कैसे कि मतलब मैं तो अपने आप को बेस्ट फिगर समझ रही थी. I was the victim one. Win-win position में थी कि सब मैं ही अच्छी हूँ और सब बुरे हैं. So it is very painful for me to accept कि I am on a mistake. And sometimes it is very difficult to sometimes the clients are in denial. तो उनको ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि जो कुछ हो रहा है ये गलत है. यू आर इन एन अब्यूजिव रिलेशनशिप. बहुत सारे पैटर्न्स हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको एड्रेस करते हैं, जो इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं. मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्लाइंट की थेरेपी से क्या एक्सपेक्टेशन है. सो जितनी थेरेपी में आने के लिए मिथ और स्टिग्मा है, उससे ज़्यादा स्टिग्मा इस चीज़ के साथ है कि मुझे 2 थेरेपी सेशन 3 थेरेपी सेशन मुझे परफेक्ट कर देंगे. जब भी पहले सेशन में क्लाइंट आएंगे, दे आर मोर इंटरेस्टेड टू आस्क के अच्छा मैम कितने सेशंस और लगेंगे. ठीक है. या मुझे फ़ोन पे वो पूछ रहे होते हैं आने से पहले कि मैम कितने सेशन में हम ठीक हो जाएंगे. तो इट्स अ ड्यूटी, और या फिर एक थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि उसने इसको ऐसे हैंडल करना है कि दे कांट टेक द प्रेशर ऑफ क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस. It's not a performance thing going on. It's a process. Therapy is a whole long, gradual growth process. As you said, therapy is a very long process. So there are also factors के transference का issue हो जाता है. तो how do you control that part के transference ना हो जहाँ पे client अपने therapist से attach हो जाता है. अच्छा, ट्रांसफरेंस को थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी. ट्रांसफरेंस इज नॉट ऑलवेज द अटैचमेंट. ट्रांसफरेंस इज when my past baggage, past feelings is affecting my present emotions. So मिसाल के तौर पे I went to a therapist and my therapist is an old lady. She's just looking like my mom. She's sitting like my mom. So घर से मैं अम्मा से तंग गई हूँ. So I will not get attached to the therapist. When I'll see her, I'll remind my mother. She'll be reminding me of my mother and I'll feel bad about her. I'll challenge her in therapy. फिर तो मुझे वो जो कहेगी मैं कभी नहीं करूँगी. So transference is, I mean, playing with the transference therapy is the कह लो कि is the climax of therapy, is the beauty of therapy. So how you deal and how you play along with the transference. Transference is जो हमने सोचा है कि it's just an attachment, it's just like dependency. That is something different. I mean, और कब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स तो मेरा ख्याल है बहुत ही कम थेरेपिस्ट के साथ अटैच होती हैं. और पॉजिटिव फीलिंग्स भी क्यों अटैच होती हैं? क्योंकि आप उसको आइडियल ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं. आपको लग रहा होता है ये वो इंसान है जो मुझे मुश्किल से निकाल सकता है. तो उसमें भी एज अगेन आपको क्लाइंट को बताना होता है यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. सो इफ़ आई डू मिस्टेक इन माई थेरेपी रूम, आई कैन डू बिकॉज आई एम अ ह्यूमन. सो टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट दैट थेरेपिस्ट इज ऑल्सो ह्यूमन and the parents are also human. I mean, everyone in the whole society, they can make mistakes. तो उसमें ये जो ट्रांसफरेंस है ये अगर आप you can work with that is amazing. And if you don't work with that, then you can refer your client to the other person. Sometimes कुछ ऐसी ट्रांसफरेंस होती है which is unavoidable. I mean, आपके कुछ अपने जैसे अभी आपने बात की थी कि आपकी कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, आपकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो क्लाइंट बहुत चैलेंज कर रहा होता है. एंड when you feel so much challenged and you know कि अच्छा मैं सही काम नहीं कर पाऊँगा, मेरा काम बाइस्ड हो रहा है, then you can refer that client to the other person. You're totally right about many things है कि transference
कि लेवल्स क्या होते हैं और किस तरह उसको डील किया जा सकता है. Thank you so much for joining us today. Thank you so much, Aneesa. Moving on, and to end this session today, I'd like to review the whole things we have learned कि थेरेपी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, थेरेपी क्यों ज़रूरी है, और आपकी एज अ क्लाइंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. आप अपने थेरेपिस्ट पे 100% नहीं डिपेंड कर सकते. एक थेरेपिस्ट भी आपको एक लेवल तक हेल्प कर सकता है. जब तक आप खुद नहीं ठीक होना चाहते तब तक आपको कोई भी शख्स, कोई भी चीज़, कोई भी थेरेपी ठीक नहीं कर सकती. We also discussed about childhood or family trauma, and we also talked about transference के वो क्या होती है और वो उसके क्या levels होते हैं, levels of attachment या फिर transference as it is के क्या होती है. Thank you so much for watching and thank you so much for joining us today. Hopefully, inshallah, we'll be back with another episode. Allah Hafiz.